So we are once again back. My name is Rahul with DNA Daily Newspaper Analysis. This is an exciting program which we have on the Vanik Bangla channel. So today it is about show me the money. It is about show me the money. Right. This is a very specialized topic, right? And here it says that the government of India must consider Supreme Court suggestion on stopping criminal proceedings against fraudsters who pay up, right? So fraudsters, what do you mean by fraudsters? Fraudster means someone, fraudster is someone who cheats or frauds people. लोगों को धोखा देता है, right? As simple as that. Fraudster is a person who cheats or frauds people. Okay, so Government of India must consider Supreme Court's suggestion on stopping criminal proceedings against fraudsters who pay up. यानी अगर वो पैसा पूरा दे देता है, right? जो पैसा लोगों को मारा है, right? And we have seen many fraudsters, proven fraudsters by the Government of India and the investigating agency, right? मेहुल चोक बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सजेशन ये है कि उन लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलता है उसको बंद हो सकता है अगर वो पूरा पैसा दे देता है, राइट? सो आज का टॉपिक वो है और हम देखते हैं इस टॉपिक को हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट? एडिटोरियल आर्टिकल में क्या लिखे हैं उसको हम देखेंगे, राइट? So the first paragraph says, much interest has been generated by the budget statement that RBI will issue digital rupees during 2022-23. It is a reiteration. Reiteration means repeat. Reiterate means to repeat. It is a reiteration of a 2017 suggestion by Government of India's high-level interministerial committee that asked RBI to introduce its own central bank digital currency. This will be a digital currency. ये आपको in the form of paper notes नहीं दिखेगा. It will be a digital currency. A CBDC is a digital form of paper currency. Holders of CBDC can transfer money digitally instead of handing over currency notes. Instead of handing over currency notes, right? Sort of आप जो अभी पेटीएम, गूगल पे, भारत पे ये सब करते हैं उस टाइप का, बट हियर इट विल बी करेंसी नोट्स जो कि डिजिटल फॉर्म में आएगा. ग्लोबली पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन सीबीडीसी हैव बीन अंडरवे सिंस 2014. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स ऑलरेडी started. The pilot project means the initial projects have started, right? However, progress is slow because this seemingly simple innovation can have unforeseen consequences. Unforeseen consequences would be
is unexpected consequences. Like कुछ भी हो सकता है. Okay. So if we look at the first, this is make haste slowly. First we will talk about make haste slowly, right? So make haste slowly is the one which we'll talk about now. और इसके बाद that digital rupee can have many implications for RBI, right? And it's saying that best to take time over it like other countries. दूसरे कंट्रीज भी इसके ऊपर टाइम लिए हैं, तो हमें भी इसके ऊपर थोड़ा टाइम लेना चाहिए, राइट? थोड़ा टाइम लेना चाहिए. ओके. मेक हेस्ट स्लोली यानी इसको करो मगर इसको स्लोली करो. ओके. अभी देखते हैं द फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या बोल रहे हैं, राइट? वो बोल रहे हैं कि एक सीबीडीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सीबीडीसी इंट्रोड्यूस किया है. सीबीडीसी इज बेसिकली, आप देखे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या करेगा? It will stop for transaction right. So this is what is digital currency, but एडिटर बोल रहे हैं कि in countries outside India, pilot projects since 2014, but in India the editor is saying कि हम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, which is a good idea, but we have to be careful. What is digital currency, right? And how it should be introduced slowly and not in a haste. इसीलिए हमारा जो हेडलाइन है वो है मेक हेस्ट स्लोली. मेक हेस्ट स्लोली. ओके. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ इज saying. Next, India today is one of the 50 odd monetary jurisdictions with a digital retail payment system that runs 24/7 and transfers are near real time. That there are 50 odd monetary jurisdictions with a digital retail payment system, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, राइट? राइट. एंड वो 24/7 आप अपना गूगल पे से, भारत पे से, यूपे से, कहीं से भी कभी भी दिन का या रात को कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट रियल टाइम. मीन्स जब ट्रांसफर करते हो इमीडिएटली वो पैसा किसी के पास वो पहुंच जाता है. RBI's pilot survey on retail payments done in 6 cities over December 2018 and January 2019, right? December 2018 and January 2019, right? इस समय के बीच में showed that digital payments are catching on fast. So
18 से लेके जनवरी 2019 कोविड होने से पहले जो डेटा मिला है, राइट, वह कैचिंग ऑन फास्ट. While cash was the preferred mode of payment for transaction up to rupees 500, digital payments were more popular for higher amounts. 500 रुपया तक लोग कैश पेमेंट्स कर रहे थे, बट उसके ऊपर का पेमेंट जो है वो डिजिटल मोड से ही ज्यादा पेमेंट हो रहा था. सो इट वाज मोर पॉपुलर, राइट. एज डिजिटल पेमेंट्स हैव बीन ग्रोइंग एट ओवर 50% ओवर द लास्ट 5 years. लास्ट 5 years में इसका 50% ग्रोथ हुआ है, राइट. द ट्रेंड इज क्लियर. फ्रॉम a user standpoint, there is no real incentive to switch to a CBDC as a growing proportion of retail transactions are already done digitally. This is very, very important. From a user standpoint, there is no real incentive to switch to a CBDC as a growing proportion of retail transactions are already done digitally. So इसे सेकेंड पैराग्राफ में जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1 इज, राइट, दैट इंडिया टुडे has are successfully running digital payment system. Right, it has a successfully running digital payment system and which is in the 24/7 mode. Okay, usually the digital payments are more popular in a 500 above rupees transaction. Right, this is the second thing which we observe in the second paragraph. Third paragraph, in the last 5 years, the third thing, the last 5 years, there has been a 50% growth in the digital payment mode through UPI payment mode, right, where you have Bharat Pay, you have Google Pay, you have the famous Paytm, right, you have the other forms of payment, right. So last 5 years there is a 50% growth, which is humongous, which is very huge, right. So digital payment has really picked up in India, okay, and we can really look forward to a digital payment. Now this proposal of CBDC, where does it stand? Now consumer, right, the consumer says that why CBDC? Why CBDC? We already have an established and popular digital payment system. So इसके बाद हम क्यों एक CBDC इंट्रोड्यूस करें, राइट, हम क्यों इसको
जो करेंसी है उस करेंसी का ही डिजिटल फॉर्म को हम क्यों यूज करें ट्रांजैक्शन में, मेरा तो काम हो जा रहा है. फॉर आरबीआई हाउएवर अ सीबीडीसी For RBI, however, a CBDC is not just another digital payment system. It has implications for the banking system that are banking system में भी इसका implication है, right? Implication is effect. Right? And are not entirely clear. Clear नहीं है. If there is a partial shift away from bank deposits to CBDC, what are the implications for the role of bank in credit creation? तो बैंक अपना जो डिपॉजिट है, जो क्रेडिट है, वो कैसे क्रिएट करेंगे? बाय एक्सटेंशन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में इसका क्या असर आएगा? द डिसइंटरमीडिएशन ऑफ बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक is an area that is being closely scrutinized by the world's leading central banks. Right? The disintermediation means intermediation is it comes from the word intermediate, means to be a party in between, right? So to be a party in between. So intermediation is when someone is being a party in between. तो उसका ऑपोजिट होगा डिसइंटरमीडिएशन, यानी जहां पर कोई पार्टी बीच में नहीं आएगा, डिसइंटरमीडिएशन. ओके, सो डिसइंटरमीडिएशन ऑफ बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक, यानी बैंक्स को अलग अलग कर देना, उनके बीच में मीडिएट नहीं करना, राइट, इज एन आइडिया दैट इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड बाय द वर्ल्ड्स लीडिंग सेंट्रल बैंक्स, यानी आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं रहेगा. और ये चीज पूरा दुनिया भर में इसको अभी कोशिश किया जा रहा है कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है, राइट. One of them, Sweden's Riksbank, launched its e-krona project in 2017. So, स्वीडन का एक बैंक है रिक्सबैंक, जिन्होंने अपना क्रोना इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ स्वीडन, तो उन्होंने लॉन्च किया है. इट्स स्टिल स्टडिंग बोथ इट्स नीड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्वीडन्स इकोनॉमी. उसका जरूरत क्या है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है on Sweden's economy, they are still studying. The case here isn't against the introduction of a CBDC. The case here isn't against the introduction of a CBDC. Case is not against the introduction of CBDC. The editor is not arguing against CBDC. Rather, it is about the need to be flexible about deadlines in this endeavor. हड़बड़ी में इस चीज को नहीं करने का है, इसको करना है जरूर. There's a positive step which RBI is taking, but it should be this is not about a payment option, right? So first point जो हम यहाँ देख रहे हैं कि RBI is saying that it's just not another payment option. Just not another payment option, right? And it has to look into the different implications. It has to look into the different implications. Okay. And what are the different implications? The different implications are
that what would be the implication in the banking system? What would be the implication in the banking system? Next is what would be the implication in the monetary policy? What would be the implication in the monetary policy? Right. Next is the disintermediation of the banks by the central bank. ये तीसरा वाला कि बैंक्स कैसे डिसएंगेज हो जाएंगे सेंट्रल बैंक से. ओके, सो these are the things which are being scrutinized. These are the things which are being scrutinized before the introduction of the digital CBDC, right? And यहाँ पर एडिटर जो बोलना चाह रहे हैं कि CBDC is a positive step, right? और हो सकता है आगे जाके it's inevitable. Inevitable means something which is bound to happen. Something which is bound to happen. But the editor is cautioning against any hurried decision. Editor is cautioning against any hurried decision. Okay, so this is the analysis of the different paragraphs which we have in this particular editorial article. Okay. Now we will do a summary of it. Now we will do a summary of it. The summary would be like this. The summary would be like this. CBDC is a step for transaction that RBI wants to introduce parallelly with the existing digital payment system. However, moreover, there is a tailwind, यानी favorable conditions
For such, but RBI has to take into consideration the impact and hence should not implement CBDC in rush or fighting against the clock. CBDC is a step for transaction that RBI wants to introduce parallelly with existing digital payment systems. Moreover, there is a tailwind, favorable conditions for such, but RBI has to take into consideration the impact and hence should not implement CBDC in rush or fighting against the clock. This is exactly what the summary can be of the first editorial article discussed today, Make Haste Slowly, right? जिसमें हम डिजिटल रुपी के बारे में बात कर रहे हैं. Our second topic is Show Me the Money. Our second topic is Show Me the Money. Now, इसमें हम बोल रहे हैं Government must consider Supreme Court suggestion on stopping criminal proceedings against fraudsters. Against fraudsters, मैंने बताया fraudsters means people who cheat and fraud others to make money from them. Right? This is a fraudster. Now it is saying that Government of India must consider कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है, बहुत पैसा लाखों करोड़ों रुपया लोगों से लेके उनको चीट किए हैं, जैसे कि ऐसा उदाहरण हमारे देश में काफी सारे हैं, राइट? तो उनके विरुद्ध तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता ही है, उनके विरुद्ध तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है. उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वो अगर पूरा पैसा विद इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए हैं तो उनका जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको अगर गवर्नमेंट एंड अदर्स दे डिफ्रॉडेड मस्ट बी टेकन अप फॉर serious consideration for Government of India. Absolutely straight, clear-cut introduction of the article by the editor saying the Supreme Court suggestion on halting criminal proceedings against economic fugitives willing to repay the money they owe to lenders and others they defrauded must be taken up for serious consideration by Government of India. जिनसे वो पैसा लिए थे, राइट, उनको अगर वो पूरा पे बैक करने का सोच रहे हैं तो उनको उनके विरुद्ध में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, राइट, तो उसको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर सकते हैं उसको उठाने के लिए. द टू जज सुप्रीम कोर्ट बेंच एडवोकेटेड दिस कोर्स noting that considerable resources like time, money and effort expended by investigating agencies like ED and CBI in trying to bring. Point number one is, in the first paragraph, point number one is that stop further criminal proceedings
against defrauds, right, done once they commit to pay back the lenders or or to whom they have from whom they have taken money. So this is the first thing they are saying, because editor kya economic, this is an economic offense. Frauding people, cheating people is an economic offense. Bringing back the economic fugitives means person who has run away from law, especially to other countries, right, is lengthy and expensive. ये जो बार बार कोर्ट में केस खींचना ईडी और सीबीआई का, राइट, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो लॉयर लोगों को लेके ये काम करते हैं और बार बार कोर्ट का अपीयरेंस होता है, राइट, सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. सो अगर पैसा वापस करने का सोच रहे हैं और वो अगर पैसा पूरा वापस दे देना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट अ मर्डरर. उसने किसी का खून नहीं किया है, राइट. The suggestion followed a co-accused in the Sterling Biotech fraud. The suggestion followed a co-accused in the Sterling Biotech fraud case, claiming he had repaid a portion of the money due from him to bank and would repay the remaining amount, but wanted protection from prosecution and harassment by investigating agencies. So he needs a protection from prosecution. He needs a protection from prosecution and harassment. So this is very important. Harassment by investigating agencies. यूजुअली ये देखा जाता है कि इस टाइप के जो ऑफेंडर होते हैं, राइट, उनका हैरेसमेंट होता है और बाद में उनको जेल में भी डाला जाता है. Government of India has enabled investigating agencies to go after high value offenders via the Fugitive Economic Offenders Act 2018. There was an act which was passed which said fugitive economic offenders. 2018 में ये एक्ट पास किया गया था. This sanctions quick seizure and sale of their assets, राइट, उनका जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं कर सकता है तो उसको ले लो, लीगली उसको सीज कर लो. However, a difficulty here is that many such fugitives have assets stashed abroad. Stashed means parked. Stashed means parked in huge amounts, and evidence required in each country.
Second paragraph is talking about that there's a company called Sterling Biotech. Now ये भी फाइनेंशियल फ्रॉड किए थे, ये भी फ्रॉड किए थे और इनका भी केस चल रहा है। तो ये बोल रहे थे कि दे हैव ऑलरेडी पेड हाफ द मनी, and if they are given protection against prosecution, यानी putting them behind the bars and harassment, ये अगर उनको इसको प्रोटेक्शन देता है तो दे विल पे बैक द होल मनी, सो पे बैक द एंटायर अमाउंट, जिनका भी वो पैसा लूटे हैं। राइट। सो यहां पर ये सब सारा चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं वो दे आर एम्पावर्ड विद द एक्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट। 218 में पास हुआ था, उसके बल पे the government of India can quickly, after they catch hold of the person who has done, जो ये लोगों से पैसा लेके उसको मार दिए हैं, राइट, उनको तुरंत उनका प्रॉपर्टीज सीज होता है और उनको उनका प्रॉपर्टीज को लेके गवर्नमेंट उसको बेचने का सोचता है। बट जो प्रॉब्लम है यहां पर, जो चैलेंज है, राइट, प्रॉपर्टीज एंड assets of such offenders kept abroad in other countries और आर बेनामी, अपने नाम से कुछ नहीं करते हैं, unless it is in someone's own name, the person who has done the economic offense, law cannot do much. So it becomes very difficult. The third thing which is important is that the laws vary greatly. The laws vary greatly in different countries. So इसीलिए it becomes very very complicated कि कोई दूसरा देश में उनका एसेट है उसको सीज करो, सीज करके फिर उनको सेल करो और उनको सेल करके फिर जो चीटेड हुआ है उनको पैसा वापस करो। This is the second part. Let's look at the third paragraph. So far from looking at years of painfully lengthy legal battle, if the end goal of both banks, others defrauded and investigating agencies is to recover the money, criminalization may actually be thwarting it. Thwarting means तीनों का ही एम है
बैंक का, जिसको चीट किया है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इन तीनों का एम है टू रिकवर द मनी, क्रिमिनलाइजेशन दैट एक्चुअली विल बी थॉटिंग, क्योंकि उसका एसेट्स आप रिकवर नहीं कर पाओगे और इधर में आप पैसा वापस नहीं कर पाओगे उसको बेच के, राइट। सो इसमें सबका लॉस होगा और उसको अगर क्रिमिनलाइज करते हैं तो वो लॉस हो जाएगा। For example, the accused in the Sterling case wants to repay bank, which would be happy to recoup the funds, but CBI isn't willing to let him off the hook, ostensibly because the law doesn't allow it to use discretion. Ostensibly means supposedly. अभी सेकेंड पैराग्राफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यहां पर बोला दे आर रेडी टू पे बैक, ओके। बैक would have many advantages. Number one, closure of long drawn case, सालों साल नहीं तो चलते रहेगा, जैसे चल रहा है हमारा नीरव मोदी का, विजय माल्या का केस। लीगल कॉस्ट saved. Third is banks happy because they get back money. Cheated person recovers money and then they pay back to the bank. ये prosecution से हम छूट जाए, right? So इस तरह से हम देख रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इस सजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, आप इसको बहुत ध्यान से इसको एक बार कंसिडर करिए। लास्ट पैराग्राफ सेज it would be worthwhile looking at monetary penalties imposed by SEBI on violation like insider trading that avoids costly litigation but penalize violators. More countries are adopting the US's plea bargaining like innovation known as deferred prosecution agreement, right? Deferred prosecution agreement यानी एक बार्गेन करते हैं उस डिफॉल्टर से, राइट, एंड उनका प्रोसिक्यूशन डेफर करते हैं, ओके। दिस अवॉइड्स criminal prosecution of company executives in lieu for hefty fines and compliance monitoring in a court approved deal. यानी जो सब एग्जीक्यूटिव्स इसमें शामिल होते हैं उनका क्रिमिनलाइजेशन, उनको प्रोसिक्यूट करना, राइट, ये चीज को अवॉइड किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में बहुत हेफ्टी फाइन, बहुत मोटा फाइन का रकम देना पड़ेगा एंड उनका आगे जाके वो सब नियम कानून मान रहे हैं कि नहीं उसका एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए। दिस इज द वे टू गो, यही है रास्ता, दिशा, एडिटर यही बोल रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रिविजिट इट्स करंट स्टांस। अभी जो स्टेप्स लेके बैठे हैं, कानून के पीछे छुप रहे हैं, राइट, और बोल रहे हैं कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ये चीज हम नहीं कर सकते, राइट, वो उससे हट के आना चाहिए। दिस इज द फाइनेंशियल फ्रॉड विक्टिम्स want their money back quickly. In return, they'll give up waiting years to maybe see the fraudster in jail. That's a good bargain. At the end of the day, हम अगर ये देखते हैं कि जिसका पैसा खोया है उसको पैसा वापस अगर मिल जाए तो आगे शायद वो जिन्होंने फ्रॉड किया था उनको भूल भी जाए। उनको जेल में सालों के बाद देयर आर मेनी पीपल जो मर भी जाते हैं बीच में जिसका पैसा उन्होंने फ्रॉड किए हैं, तो क्या फायदा उनको जेल में देख के, थोड़ा दिल में तसल्ली होगा, देयर वुड बी अ लिटिल सैटिस्फैक्शन इन द हार्ट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन फ्रॉडेड, बट एक्चुअली
the money never comes back. And even after that, उनको जेल डालने के बाद उनका एसेट्स वैसेट्स सेल करने के बाद वो पैसा अगर सरकार के पास आता है तो सरकार उसको पे कर सकती है. So the next paragraph talks about the last two paragraphs, right? Talks about the last paragraph, right? The last paragraph talks about that, it would be good to look into this suggestion, right? And maybe adopt the US type or model of payback and deferred prosecution agreement, right? So that would be good, and this is the way it should go, because गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टांस है वो अभी काफी रिजिड है, उससे उनको हट जाना चाहिए, राइट? बिकॉज द फाइनेंशियल फ्रॉड विक्टिम्स, दे एक्चुअली वांट देयर money back quickly. The basic fact is this: want their money back quickly, right? And in return, they would give up. कि उसको जेल जाए ना जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं होने वाला है. Okay. So we come to the end of this second editorial article, 3rd February का, right? अभी इसमें समरी करके देखते हैं क्या समरी होता है. The summary would be that Supreme Court have suggested the Government of India to decriminalize and stop prosecution proceedings if the fraudsters agree to pay back the people who have invested in them it involves the proceedings involve cost and long delay in persecution. Okay. So the Government of India should change stance
and pay back the public quickly. So Supreme Court have suggested the Government of India to decriminalize and stop prosecution proceedings if the fraudsters agree to pay back the people who have invested in them. ये proceedings बहुत समय लेता है, involves a lot of time and long delay in prosecution, right? And Government of India should change stance and hence make a road जहाँ पर कि इनको जेल में भरने से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, इनका पैसा कैसे वापस हो जाता है, एंड ये they are happy, right? That was all for today. आज के लिए दो articles, which is show me the money and make haste slowly. One was on digital currency, the second was on fraudsters and their prosecution and how the money can be given back to the customers who have been cheated. So another edition, exciting edition of DNA is over, right? We look forward to meeting very soon and conduct another edition of DNA. Thank you.